કહેવાય છે કે જંગમાં કોઈ કોઈનું સગું હોતું નથી। મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં આ કહેવત સાચી પણ ઠરી છે। એક જ પરિવારના ભાઈ બહેન આજે એકબીજા વિરુદ્ધ જંગે ચડ્યા છે। એક તરફ ભાજપના પંકજા મુંડે તો બીજી તરફ રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના ધનંજય મુંડે જે તેમના ભાઈ છે। મહારાષ્ટ્રના મહાસંગ્રામમાં આજે જોઈએ આ બંને ભાઈ બહેન વચ્ચે ચાલી રહેલું વાકયુદ્ધ। મહાસંગ્રામમાં ભૂલ્યા ભાન, ભાઈ બહેન બન્યા વેરી, मुंडे परिवार में वार पलटवार। ते राजकारणात जेव्हापासून आले आम्ही सत्तेत आलोच नाही आणि ते राष्ट्रवादीत गेले की आमची सत्ता चालली। महाराष्ट्रना ग्राम विकास प्रधान पंकजा मुंडे जेने बदनसीब ठेरवी रह्या छे ए बीजा कोई नहीं पण तेमना भाई धनंजय मुंडे छे। लोकसभा चूंटणीना प्रचारमां आ भाई बहन संबंधो विશે एकबीजा पर करी रह्या छे वार अने पलटवार। बहन प्रीतम मुंडेना प्रचार माटे पहोंचेला पंकजा मुंडे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीना विरोधी पक्ष नेता अने पोताना भाई धनंजय मुंडे पर धाक धमकीथी पैसा लेवानो आरोप करता कह्युं के आवी तडजोड करनाराओ गोपीनाथ मुंडेना परिवारना वंशज होई ज न शके। आता तोडपाणी नेते तक्रार आमदार असली गँग झाल्यावर काय? मुंडे साहेबांनी जीवनामध्ये सामान्य माणसासाठी लढा दिला। ए मुंडे साहेबांचा वारसा होऊ शकते तोडपाणी करणारे लोक? बहनना वार पर भाई धनंजय मुंडे पण चूप रह्या नहीं, तेमणे पलटवार कर्यो। विरोधी पक्ष नेत्यांनी जर तोडपाणी केली असती तर विरोधी पक्ष नेता ज्या पद्धतीने सरकारवर आज तुटून पडलाय, तुमच्यापैकी 16 मंत्र्यांचे घोटाळे जे मी या ठिकाणी बाहेर काढलेत ते मी कधीच काढू शकलो नसतो। फक्त एवढंच आहे, जनाची नाही मनाची, शेतकऱ्यांचे पैसे जे ऊसाचे आहेत ते आपण पैसे नसतील आईंची जमीन घाण ठेवण्यापेक्षा आपण चिक्कीमध्ये जे पैसे खाल्लेत ते पैसे जर आपण दिले तर ते बरोबर। TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડિયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। भाई बहननी आ लड़ाई एटली उग्र बनी है कि एनसीपीना नगरसेवक पांडुरंग गायकवाड़नी हत्या माटे धनंजय मुंडे भाजपने जवाबदार ठेरवी रह्या छे, ज्यारे पंकजा मुंडे पोताना भाईनी पार्टीने दोष आपी रह्या छे। आम बीडनी बेठक माटे भाई बहन में जंग बराबरनी जामी छे। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 मुंबई। TV9 ગુજરાતીની YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ બટન જરૂરથી દબાવો જેથી દરેક વિડિયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે।